Okay, let's start this lecture again. So we have seen that मैं इसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक कर रहा था. ओके, मैंने कहा था कि x थीटा के बराबर है फॉर ऑल x इन x बिकॉज थीटा इज अ मैप. कैन डू दिस विच implies x belongs to theta composition theta inverse for all x in x. So that means this theta composition theta inverse is a reflexive relation, is reflexive. Okay, so therefore theta composition theta inverse is reflexive, So next it's symmetric. That's simple. So let xy belongs to theta composition theta inverse. It means that x theta is y theta by definition of theta composition theta inverse, which means y theta is equal to x theta, which means that y, this is very simple, it belongs to theta composition theta. इसी तरह से आप इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं. So therefore theta composition theta inverse is symmetric, is symmetric. This relation is symmetric. ट्रांजिटिव आप इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप खुद चेक कीजिए इसकी. नीचे एक नोट लिखिए. This equivalence is called the kernel of theta. Okay, we call the equivalence theta composition theta inverse the kernel of theta. Kernel of theta. Okay, and we write kernel of theta is equal to theta composition theta inverse. Okay, theta composition theta inverse. Exercise if rho is an equivalence relation on x, then show that kernel of rho natural, which is a map from x to x over rho natural is equal to rho. Solution इसका kernel of rho natural, it's a relation. Rho is also a relation. Both are equivalences. We know that kernel of theta, if theta is a map, then kernel of theta, which is equal to theta composition theta inverse, is equivalence. So both the relations are equivalences, and we show that they are actually equal. So let's choose a pair in this. So let's choose a pair in kernel of rho natural.
So whenever xy is in the pair of kernel of theta means theta composition theta inverse. So here it is rho natural composition rho natural inverse. Okay. So this is true if and only if the images are equal. X rho natural is same as y rho natural, and this is same if and only if what's the image of x under rho natural. This is the rho class of A. It's equal to here rho class of x, rho class of y. But then this means the pair x y, they are rho related. So whenever x and y are in kernel of rho natural, then they are in rho also. So therefore the kernel of rho natural is equal to rho. Kernel of rho natural is rho. Okay, now if we have a class of equivalences, then it's very easy to verify that their intersection is also an equivalence. If we have a family rho I such that I belongs to I is indexed by the set I is a family. Obviously it's a non-empty family comes out. You must write non-empty family. Okay, is a non-empty family of equivalences then their intersection of rho i's, I is in the index set I is also an equivalence. This is very simple to verify. So you verify this. Now we start with the relation R and we try to find the equivalence relation generated by R. जैसे हम सबसेट से सब ग्रुप को जनरेट करते हैं, वैसे हम किसी भी रिलेशन से इक्विवेलेंस को जनरेट कर सकते हैं. If R is any relation on X, if R is any relation on X, it may be empty relation as well. Then the family of equivalences on X containing R, वो सारे रिलेशंस जो कि इक्विवेलेंस है और R को कंटेन कर रही है, इज नॉन एम्पिटी. आप में से बता सकता है वो कैसे नॉन एम्पिटी है? That is this class M, which are the relations rho, subset of X cross X, it's a relation on X, such that rho is an equivalence and R is contained in rho. That is, this class is not non-empty.
हाँ, आप में से कोई बता सकता है ये कैसे नॉन एम्प्टी है? इसमें कौन सी इक्विवेलेंस है? विच इक्विवेलेंस इज कंटेन्ड इन एम? यस, हाँ बताइए। हाँ, इंक्लूजन? कौन सी इंक्लूजन? आइडेंटिटी कहाँ है? आर मतलब आर आइडेंटिटी का सबसेट है। आर है आइडेंटिटी रिलेशन का सबसेट? आर उसका सबसेट होना चाहिए। हाँ, उस रिलेशन का वो इक्विवेलेंस होनी चाहिए और उसका आर सबसेट होना चाहिए। एक्स क्रॉस एक्स सर। ओके, एक्स क्रॉस एक्स, एक्स क्रॉस एक्स, ठीक है। एक्स क्रॉस एक्स इज अ रिलेशन clearly x cross x, which is the universal relation, and this relation is equivalence and it contains R, because R is the relation, it's always subset of x cross x. So clearly this x cross x, this is an equivalence and R is always subset of, because in the relation is subset of x cross x. So therefore this M is non-empty. M is non-empty. So hence this relation rho, which is the intersection of all such relations, okay, it's the intersection of let's say denote this by sigma, not by rho. This sigma, which is equal to the intersection of rho's, where rho belongs to this M, and this is also an equivalence and contains R, and contains ये भी एक, क्योंकि हर कोई रो आर को कंटेन कर रहा है, इनका इंटरसेक्शन है वो भी आर को कंटेन करेगा, और इंटरसेक्शन ऑफ इक्विवेलेंसेस इज अगेन एन इक्विवेलेंस. But this sigma, which is the intersection, it is the smallest, but this sigma is the smallest equivalence containing R. It is the smallest equivalence containing R. We call it the equivalence generated by R. The equivalence generated by R. We call it the equivalence generated by R, and denote it by RE, R power E. So that is what's R power E actually. It is the intersection of all equivalences containing R. It's intersection of all rows such that row belongs to M. This is the equivalence generated by R.
Okay, so now if S is a reflexive relation, if S is a reflexive relation, on X, that is S contains the identity relation. Ix is contained in S. Then we have the following: S subset of S composition S, which is subset of S composition S composition S, and so on and so forth. And which this can be written as S subset of S square subset of S cube. अगर आप इसकी वेरिफिकेशन चाहते हो, हाउ इट इज सबसेट, since this thing is true, Ix is subset of S, so let's apply S on both sides. This we already done. This implies Ix composition S is subset of S composition S, and you can see this Ix composition S is actually S square. This is Ix composition S is actually S. It's S subset of S square. अब इसके बाद आपको प्रूव करना S square subset of S cube, वो भी आ जाएगा. S square subset of S cube. Since this S square, it contains the identity relation, S square आपको प्रूव करना है S square is subset of S cube. Okay, S square is subset of, हाँ आप इसी को S दोनों साइड से अप्लाई कीजिए. S is subset of S square. This implies S composition S is subset of S square composition S, so which implies S square is subset of S cube, and so on and so forth. अब इसमें जो यूज आपने किया, ये अगर I का सबसेट है S का, तो इनका कंपोजिशन ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी. ये आपने ऑलरेडी की है. दिस प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी डन. If rho is subset of sigma, then rho composition tau is subset of rho sigma composition tau. ये आपने किया है एक जगह. अब ये आपको वेरीफाई करना है एक्चुअली. Ix composition S is equal to S. This thing, these two are equal. Ix composition S is equal to S. Ix composition S is equal to S. हाँ रुकैया, आप बताएं इसको कैसे करें हम. Ix composition, both are sets, both are relations. Inclusion. तो कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से करें? यस, रोल नंबर 30. जी सर. हाँ, कहाँ से हम इसको स्टार्ट करें? आपको प्रूव, ये दोनों सेट्स है ना एक्चुअली, आपको प्रूव करना है सेट्स इक्वल है. कैसे करें? आपके पास दो सेट्स है ए और बी, आपको प्रूव करना है ये इक्वल है. कैसे करेगा? आप इसको भूलिए, आप क्या है, आप कैसे इसको, हाँ कैसे आप करते हो ये? सर इसमें कोई एलिमेंट लेंगे. किस में? ए में. यस सर. तो यहाँ पर किस में लेंगे एलिमेंट? है Ix composition. ओके, Ix composition S. Ix composition S क्या है? It's a relation. It's a relation है. तो इसमें हम एलिमेंट लेंगे, मतलब इसमें एलिमेंट्स क्या होगी? Pairs होगी. So let's choose a pair in this. अब you can apply the definition of composition. So composition का मतलब क्या है? First element belongs to
there exists है ना, there exists z belongs to x such that xz is in Ix and zy is in s. ओके, बट व्हाट्स Ix? Ix में सिर्फ डायगोनल रिलेशन है ना, इसमें सिर्फ x x है, तो x z मीन्स Ix, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? Ix जो है ना, Ix is this relation, it's consisting of these pairs x x with x is in x. तो x equals to z, x equals to Z. but then this zy is in s, so z is x, so xy belongs to s. तो आपने पेयर ली कंपोजिशन से, वो पेयर कहाँ पर आ गई? s में, तो इसका मतलब है कि कंपोजिशन जो है it is subset of s, it is subset of s. गुड. हाँ, आप शाफिया, अब आपको इसका रिवर्स इंक्लूजन चाहिए. आपको प्रूव करना है s सबसेट ऑफ Ix कंपोजिशन s. आप कैसे करोगे? तो मैं लूंगी S में पहले कोई ऑर्डर पेयर. ओके, लेट्स टेक अ पेयर इन s. ऐसा फिर उसे दिखाऊंगी इसमें. हाँ, इसमें कैसे आ जाएगा? Ix proportion with S. हाँ, कंपोजिशन में कैसे? देयर शुड एग्जिस्ट सम z सच दैट x z बिलोंग्स टू Ix एंड z y बिलोंग्स टू s. है कोई ऐसा एलिमेंट आपके पास? There should exist some z in x such that x z belongs to Ix and z y belongs to s. तब जाके ये x y कंपोजिशन में होगा. है कोई आपकी नज़र में, आपको कुछ नज़र है? कोई एलिमेंट है ऐसा जिसकी ये प्रॉपर्टी है? कोई z है जिसकी ये प्रॉपर्टी है? यस, अनलिव. अनलिव है क्लास में? ओके, रोल नंबर रोल नंबर 34 है. ओके, 28. हाँ, 20. आप बताइए, आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है इस z टाइप का, कोई एलिमेंट with this property x z belongs to Ix and zy belongs to s. Z equal to 1. yes, 1 कैसे x में होगा? x कोई सेमी ग्रुप तो नहीं है ना, it's any set. x comma x. good, so we choose z equal to x, क्योंकि x की अगर हम z का वैल्यू x देगा ना, इसकी प्रॉपर्टी x x Ix में है और x y तो है ही Ix में, वो तो ऑलरेडी आपने लिया. so then x x belongs to Ix, ये तो because it's this diagonal relation and x y belongs to s. but this one it gives x y belongs to the composition, belongs to the composition. so therefore your s is subset of Ix composition s. so thus s is equal to I composition s, Ix composition s.
किसी को कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? Yes, any question?